Hello all, welcome to Data Testing Zone again. So in this video, proceeding with our framework, we will be seeing what SupaBase is because हम लोग यही यूज करने वाले हैं Postgres environment के लिए. So SupaBase is a Postgres development platform hosted on cloud. ठीक है, तो ये हम लोग एज अ फ्री सर्विस यूज कर सकते हैं टू क्रिएट टेबल्स ऑन Postgres लाइक एनवायरनमेंट. ये आपको Postgres लाइक एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो वंस यू गो ऑन योर क्रोम, आप superbase.com डालो इसमें सर्च बार में एंड देन यू विल लैंड टू दिस पेज. ओके, एंड देन यू कैन गो टू साइन इन. आई हैव ऑलरेडी साइंड इन वंस, so for me it will just a second. Yeah, I have signed in using GitHub. So it will directly land me to the dashboard. Okay. And then I have to create a new organization. Your step would be you have to create a new organization. Okay. So the new organization can be anything. I will create as this or two. That is the previously created org. It should be personal, free, $0 per month, and then create an organization. Okay. Once you create an organization, so you have to create a new project inside this new organization. Okay, so this is the sample project name. You can just place it as Python data automation, data automation project. This can be your name, and then you can provide a password. Okay, it is saying it is not strong enough, so let me try. Okay, so this is a password, and then put the region as South Asia, Mumbai, and then create new project. ठीक है, तो जब आप ये note down this password and project name. Okay, it will be used when we create the framework. So your project is ready. Now when you create, जब हम लोग यहाँ टेबल क्रिएट कर लेंगे, तो जब यहाँ पे टेबल्स एडिटर में आप जाओगे, यू विल सी अ टेबल हियर. ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी टेबल मिलेगी, बट सिंस वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी टेबल एंड दैट वी विल डू थ्रू पाइचार्ट, तो अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है. बट येस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू क्रिएट अ अकाउंट इन सुपरबेस. उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशन. Inside that organization, you have to create a project and remember the password that you have created for that project. Okay. So if you are clear till here, then we will move on to making the structure of our project in PyCharm. Let's hop into next video to learn that. Thank you.